Hello my dear friends and welcome to my YouTube channel The Learning Vibe. So going ahead in our lean manufacturing tutorial series, today I am going to explain you about the lean tool which is known as KPI. KPI is nothing but key performance indicators. Believe my dear friends, for successful growth in our company or the successful growth in our life, we should have some goals, we should have some KPIs, and by measuring that KPI we can understand how good we are improving or how good the things are going on in our surroundings. So that's nothing but the KPI. So let us study this interesting topic in a very systematic manner. So in this video we are going to learn about what is KPI, why KPIs are important, how we can set effective KPIs, then how we can measure the KPI, then how we have to do the evaluation and the adjustments in the KPI, and then very importantly we are going to learn about what are different types and examples of KPI. So without wasting a single minute, let us start the videos. तो सबसे पहले हम KPI क्या होता है वो स्टडी करेंगे. So simply KPI stands for Key Performance Indicator. It is nothing but a quantifiable measure of performance over a particular period of time for a specific objective. See, it is nothing but a quantifiable measure. It is a metric or it is a quantifiable measure that we measure after a particular period of time for a specific objective. अगर समझो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे मेरा वेट लॉस करना है, वेट कम करना है, तो हम क्या करेंगे, आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हम हमारा वेट चेक करेंगे. तो जो हमारा वेट आएगा मे बी 40 किलो, 50 किलो, 70 किलो, दैट इज अवर क्वांटिफाइबल मेजर. सो अगर वेट लॉस करना है तो हमारा क्वांटिफाइबल मेजर क्या होगा कि हम वेट चेक करेंगे ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट वी विल कम टू नो वेदर वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन or if we are achieving our goals or not. So it is very important in that aspect. So KPIs provide the target for teams to shoot for the milestone. Yes, KPI provide one target, one direction in which we have to move ahead, and it definitely help our team to focus on the things and have good strategy to achieve it. So a common example of KPI can be like new customers per month. So it is a KPI we can measure, like we can measure अगर कोई कंपनी में किसी इंडिविजुअल को एक KPI दिया है कि you have to bring 100 customers per month. So that is the KPI that is given by one boss to his employee. So yeah, it can be measurable. After 1 month we will measure कि क्या उन्होंने 100 customers per month में कनेक्ट किया है क्या all over India से, all over world से. So from here we can understand कि वो employee कैसे perform कर रहा है, and whether he is moving properly, not moving properly, what problems he is facing. So it is very important to set KPIs in industries, in professional life. So this is nothing but a simple meaning or simple definition of KPI. Hope आप लोगों को समझ में आया होगा. अब हम ये स्टडी करेंगे कि KPI जरूरी क्यों है, why they are very much important. Because they keep the teams aligned. They provide proper health check in the sense proper reality check. If we set the KPIs for our particular task, then periodically we can analyze and we can have proper check regarding our things. We can make proper adjustments. If we think that the things are not going as per our expectation, so by calculating or by analyzing the KPIs, we can have proper adjustment, and of course it gives the accountability to your team. So your team will become more responsible regarding the things and all. So it is very, very important to set the KPIs for each and every individual in the organization. Now, how we have to set the effective KPIs? So for this, see, for setting the effective KPI, primarily we require that our organization strategic objectives, we should align our KPIs with our objectives. मतलब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स है, फॉर एग्जांपल कि प्रॉफिट होना है, एफिशिएंसी इंप्रूव होना है, प्रोडक्शन इंप्रूव होना है, क्वालिटी चाहिए, ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को अलाइन करके हमें हमारे प्रोफेशनल, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल एम्प्लॉय के KPI सेट करते हैं, so that we can measure whether we are moving towards our objectives or not. And
keep in mind that the KPIs should be very smart. तो my dear friends, ऑलरेडी मैंने एक स्मार्ट गोल के ऊपर एक यूट्यूब वीडियो मेरा ट्यूटोरियल सीरीज बनाया है, आपको मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके वो वीडियो लिंक तो प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं. तो स्मार्ट इज नथिंग बट स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड. Whatever KPIs we are setting, it should be smart KPIs. This ensures that they serve as an actionable tool for driving performance and success. KPIs serve as very actionable tool for driving the performance as well as success of your organization. Hope आप लोगों को समझ में आया होगा friends. The next point we are going to study is how we have to measure the KPIs. See, only implementing KPIs. हमने हमारे एम्प्लॉइज के KPI सेट कर दिए, उनके टारगेट सेट कर दिए, उनको गोल दे दिया है. इट इज नॉट जस्ट इनफ. आफ्टर सेटिंग द KPI we have to go for measurement also. So measurement techniques such as scorecard, KPI dashboard, data analysis, they are very important for calculating the progress of their KPIs, so that we will get the proper meaningful insights from their work, and we can manage that, whether they are doing progress, whether they are not doing progress, and we can give our valuable feedback to our employees. देखिए फ्रेंड्स, जो KPI होता है वो इवन इंक्रीमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब हमारा परफॉर्मेंस रिव्यू होता है, अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री में हर 6 मंथ में, हर 1 ईयर में परफॉर्मेंस रिव्यू होता है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स का, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय का, जहाँ पे उनके KPI के अगेंस्ट उनका परफॉर्मेंस स्कोर किया जाता है, रेट किया जाता है, एंड अकॉर्डिंगली दे विल गेट द प्रमोशन इंक्रीमेंट. सो इट इज very important that we set the correct KPI and we have proper analysis system to see the progress of our employee towards the KPI, and we can properly adjust and properly utilize with that KPI. That's why measurement technique is very important in KPI. Next is how we have to do KPI evaluation and adjustments. So when it comes to KPI evaluation and adjustment, so basically देखो, एक बार हम लोगों ने मेजरमेंट टेक्निक देख लिया, उसी हिसाब से हमें 6 मंथ में, 1 ईयर में, 3 मंथ्स में, क्वार्टरली वंस, ईयरली वंस हमें KPI की इवैल्यूएशंस करने, एंड इवन वी हैव टू एडजस्ट देम. सी, एक बार ऐसा नहीं है कि KPI हमने 1 साल पहले सेट किया था, लेकिन अभी डायनामिक चेंज हो गए, मार्केट के, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के डायनामिक चेंज हो गए, तो उस हिसाब से हमें स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज को सेट करते हुए KPIs में थोड़ा मोल्ड करना है, एडजस्ट करके we can go ahead with our KPI objectives. So now we are going to study about what are different types of KPI. KPI के बहुत सारे types हैं. So what are major different types of? So the first type is quantitative indicators. Quantitative indicators indicates with the continuous or the discrete numbers like ratio, percentage and weight. तो जो क्वांटिटेटिव KPI होते हैं उनका एक क्वांटिटी होता है, उनका एक नंबर होता है जिससे हम प्रोग्रेस मेजर करते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया है, वेट लॉस. तो वेट लॉस के लिए हम पीरियोडिक टाइम में हमारा वेट कैलकुलेट करके उसको हम मेजर कर सकते हैं. फिर उसके बाद आता है क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स, क्वालिटेटिव KPIs. क्वालिटेटिव KPIs आर expressed in terms of feelings, in terms of opinions, like by taking the surveys, feedback, we will come to know about we will come to know the results, and that results are used as our KPI indicators. Next is leading indicators. So leading indicators are nothing but the kinds of variables which help us for the long-term trends. When we want to study the long-term trends, leading indicators are very important, and they will predict the future outcome of your business process too. Then next is lagging indicators. So this compares the business current performance in particular field with the past performance in the same field. So lagging indicators क्या करता है, अभी कंपनी का जो करंट परफॉर्मेंस है उसको हमारा जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है उससे कंपैरिजन करता है, and accordingly we will get the comparison idea कि what is our current performance and how was our current performance over past of period.
Next is input indicators. Input indicators nothing but it helps to indicate, it helps to identify whatever inputs we are giving that are sufficient or not sufficient and how efficiently they are utilizing their resources. Output indicators क्या होता है, जो भी input indicators हम दे रहे हैं, input KPI सेट कर रहे हैं, उससे हमें प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है क्या, कितना यूजफुल कितना फ्रूटफुल आउटपुट वो दे रहा है. ऐसा नहीं होना, देखो अगर हम 100 इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट भी 100 आना है. ठीक है, अगर हम इनपुट 100 दे रहे हैं आउटपुट 90 आ रहा है, then there is something is getting deviated in the process. So this we can get help, we can analyze with the input and the output KPIs. Next is process indicator. It helps to identify the efficiency of our process and how effectively we can work on it. Next is practical indicators. So it also basically involves observation, feedback on the process. Then next is directional indicators. Directional indicators and the KPIs helps in the comparison with our competitors. हमारे competitors क्या कर रहे हैं and what we are doing. It will be get denoted with the help of our directional indicator and it shows the direction on which we are moving ahead. Next is actionable indicators. Actionable indicators give you power to take the potential action on some of the things which is affecting the KPI. Next is financial indicators. Financial indicator is expressed in terms of your monetary growth, stability, profit margin and everything. Next is outcome indicators. These indicators are marker of whether the program is meeting its goal via the short or long term. Yes, whether our objective is meeting with our goals or not, it can be simply indicated by the outcome indicator. So my dear friends, these are 12 important types of indicators, KPI indicator that one should be aware and should be set in every organization for the professional growth of their workplace and the organization. होप आप लोगों को समझ में आया होगा फ्रेंड. अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आया है, इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन इन डिटेल एंड एक्सप्लेन यू, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पुट इन कमेंट सेक्शन, आई विल रीच बैक टू यू. The next point which we are going to study is what are the different examples of KPI. ऐसे तो बहुत सारे KPI के बहुत सारे एग्जाम्पल है. So I am presenting you some of the common examples. लाइक कस्टमर्स KPI. तो कस्टमर KPI में कैसे हो सकता है कि जो स्टोर्स है, जो ब्रांड्स है, दे विल पुट कस्टमर KPI लाइक कस्टमर रिटेंशन, हाउ मच कस्टमर्स वी आर रिटेनिंग, हाउ मच कस्टमर वी आर कीपिंग विद अस इन अ ईयर, दैट कैन बी कस्टमर KPI. ऑपरेशनल KPI लाइक एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, ये KPI हो सकता है कि आपकी एफिशिएंसी कितना है, प्रोडक्टिविटी कितना है, वेदर एम्प्लॉइज आर सेटिस्फाइड और हाउ सेटिस्फाइंगली दे आर डूइंग द वर्क. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल KPIs. तो फाइनेंशियल KPIs में जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, लाइक और प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, अकाउंट्स रिसीव्ड, इन्वेंट्री टर्नओवर रेट, एंड दिस ऑल KPIs will be like financial related KPI. Then marketing related KPI. So if you want to study about marketing related KPI, it can be like how much leads you have generated in a month, and how much call to action conversion has taken place, how much monthly website traffic has taken place. So these all are related to marketing related KPIs. And the next is sales KPI. Sales KPI भी वही है, आपने कितने लीड जनरेट हुए थे, उसमें से कितने आपने सेल में कन्वर्ट किए, and how effectively you have motivated people for the sale of that particular product. So these are all the examples of KPI for their respective field, respective aspect. तो ऐसे सारे फील्ड के अपने अपने KPI होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है, वर्क करती है, एंड उसको डेवलप करती है, एडजस्ट करके वी कैन हैव प्रॉपर प्रोग्रेस ऑफ आवर एम्प्लॉइज, बॉस एंड ऑर्गेनाइजेशन. होप आप लोगों को समझ में आया होगा फ्रेंड्स. So that's all my dear friends. आज का वीडियो KPI के ऊपर, होप आप लोगों को समझ में आया होगा KPI का सारा एस्पेक्ट्स. कुछ समझ नहीं आया, if you want me to explain something in detail, please put it in comment box. I will reach back to you. So thank you. Till that, like, follow and subscribe my YouTube channel The Learning Vibe, and keep learning and have a nice day. Thank you.